Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine, isn't it? Say yes, we all are fine. Alhamdulillah. Very nice. Now today we are present in our science class, isn't it? Yes. अच्छा, कल हमने रीडिंग की थी कौन सी? चैप्टर 10. Yes. What is light? Isn't it? जी, और आपने रीडिंग की थी अच्छे से, टीचर को वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की थी. वेरी नाइस. अब हम क्या करेंगे, आज थोड़ी सी फर्दर मोर रीडिंग करेंगे सो डैट आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए. और जितना अच्छी तरीके से हम चैप्टर को रीड करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तरीके से क्लियर होते रहेंगे. ठीक है. नाउ ओपन पेज नंबर 81. Now start reading. Natural light from living things. Natural light from living things. अच्छा, यानी कुदरती लाइट जो है, कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत पैदा की है कि वो नेचुरली उनके अंदर एक केमिकल ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आपने सुना होगा जुगनू, ठीक है, फायरफ्लाई जैसे हम कहते हैं जुगनू. जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है, मगर उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने खूबी पैदा की है कि वो रात के अंधेरे में चमकता है. ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लाइट फ्रॉम लिविंग थिंग्स. ठीक है, चलें अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सम लिविंग थिंग्स मेक देयर लाइट. दिस इज नेचुरल लाइट. यानी कि कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और वो नेचुरल लाइट कहलाती है. Fireflies make their light. जुगनू. Fireflies make their light. There is a chemical in the body that creates this light. Only the male firefly can create this light. There are some deep sea plants and fish that also make their light. The light is natural. Humans cannot control natural sources of light. We cannot turn them on or off. We cannot change the power of natural lights. यानी कि आपने जुगनू को देखा, जुगनू जो है वो खुद ही अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं और ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ मेल फायरफ्लाई में मौजूद होती है. यानी कि जो मेल जुगनू होते हैं उनके अंदर ये खुसूसियत अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है. इसी तरीके से बहुत सारे कुछ प्लांट्स भी हैं और कुछ फिशेस भी हैं जो डीप सी में होते हैं और वो भी नेचुरली लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, ह्यूमन नेचुरल लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ आर्टिफिशियल लाइट. Humans can create and control artificial lights. Torchlight, the light of a mobile phone, the light of a firework are artificial sources of light. Human can create them
Human can create them when they want. When they want. Humans can also increase. Humans can also increase and decrease the power of artificial light. The power of artificial light. For example, you can increase the amount of light in a room by replacing a smaller bulb with a bigger one. Humans can increase or decrease the duration of artificial light. For example, you can turn a torch on and off. So how many different sources of artificial light do you see around you? Some sources of light produce heat. Fire creates light. But you cannot touch it. That's because fire also produces heat. Some sources of artificial light do not produce heat. And even they do, it's little. For example, the screen of a mobile phone is a source of light, but it produces very little heat. The flashlight is a source of light. You can touch it because it does not produce heat. जी जनाब, अब आपने क्या करना है, अच्छे से अब आपको वर्ड्स जो भी डिफ़िकल्ट थे वो आप लोग को पढ़ने आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे फर्दर रीडिंग जो है आपने उसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपने टीचर को उसके वीडियो रिकॉर्ड करके आपने उसे सेंड करना है, ठीक है। और क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।